नमस्कार all of you. तो हमें लास्ट क्लास रे ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ रो डिफरेंस करिका देखथिलु। आज गोटे टाइप रो हमें गोटे इंपोर्टेंट क्लास एटा कोन ना आगु को हमें जो बढ़िबा रेलेवेंसी ओके सेपड़ को जतले जिबा ता आगु हमको किछटा बेसिक टर्म्स जानिबार अछि एविडेंस लॉ। दीज टर्म्स आर वेरी इंपोर्टेंट काहे ना एटा नोट्स रे हो कि जतले मैं एक्सप्लेनेशन देबो एटा ऑटोमेटिकली आसीबो। ता भितरु किछटा हम ऑलरेडी देखि देइछु आउ किछटा आपण आज डिस्कस करबा। ओके सो जेमति कि लेक्स फॉर आई है ओके ऑलरेडी दिस वी हैव डन किंतु बहुत गुडे कांसेप्ट्स अछि किछटा मैक्सिम्स अछि इंपोर्टेंट जोड़ा हमें जानिबार निहाती दरकार। तो आज क्लास रे बेसिकली हमें तारी ऊपर ही कंसंट्रेट करिवो। ओके सो लेट अस गो थ्रू। तो फर्स्ट हैला लेक्स फॉर आई ऑलरेडी फर्स्ट क्लास रे हमें एटा डिस्कस कर देइछु। ओके दैट मींस द लॉ ऑफ द फोरम और द रूल ऑफ द फोरम जो जगह रे ट्रायल टा होची सेठी जो जहा भी रूल आपनकर अछि ओके सेटा that is going to be okay applicable to the case ठीक अछि। although the cause of action सेटा अलगा जगह रे भी हे थाई पारे ठीक अछि। that is the concept of lex fori right ता माने जे विषय कहूची the law of the forum okay the court where the case is tried ठीक अछि। so एटा आपण it is better you write it along with me मु तो कॉन्सेप्ट आपण को बुझौची मु बुझेला भितर आपण लिखि दे परिबे इधर सेटा करि परिबे नहले आ गोटे जिंस कर परिबे कि आफ्टर द क्लास आपण सेटा पुनी निजे तको लिखि दे परिबे। ओके पीडीएफ टा मु क्लास परे सेही जोटी आपणकर वीडियो जोडा अछि सेही ये रे क्लास नंबर संगे थिबो ठीक अछि। तो केते गोटे क्लासेस रे मु डिक्टेट कर दोची आपण को जो क्लास रे मु डिक्टेट करूनी आउ पीडीएफ की पीपीटी यूज करूची सेटा मु आपणकर ऐप रे शेयर कर देबी तो सेटा आपण डायरेक्टली देखि दे परिबे बट स्टिल मु आपण को रेकमेंड करिवि कि आपण लेखंतु एबे ही लेखंतु ओके कि पीडीएफ रा तो सर देई देबे तो मु परे लिखिबि तको ओके ताटू बेटर मो संगे लिखि दियंतु। तो फर्स्ट लेखंतु तो हेडिंग दियंतु तार ओके इंपोर्टेंट मैक्सिम्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन एविडेंस लॉ एटा केवल बीएसए पे कोनी अपन इंडियन एविडेंस एक्ट में भी माने जनरली एविडेंस लॉ रे इंपोर्टेंट मैक्सिम्स केवल मैक्सिम्स नो टर्म्स उडा भी कोन अछि हैला तो सेटा लिखंतु हेडिंग ता दियंतु एटा इंपोर्टेंट मैक्सिम्स एंड टर्म्स ओके इन एविडेंस लॉ इन एविडेंस लॉ। तो फर्स्ट सबुटु फंडामेंटल जोटा जोटा कि हमें फर्स्ट क्लास रे भी डिटेल्स रे पढिचु सेटा हैला लेक्स फॉर आई ठीक अछि लॉ ऑफ द फोरम। तो लिखंतु सेटा नंबर 1 पॉइंट करके लिखंतु 25 टा खंडे अछि ओके जस्ट हमें डिस्कशन करिवा मु डिस्कशन कला भीतर आपण लिखंतु अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट इट लेटर बट सेटा पुनी एक कैन आपन को एक्स्ट्रा टाइम द पड़ियो समयटा बहुत ही वैल्यूएबल जो समय रे हमें गोटे कामटा जल्दी कर दे परिबा बेटर टू डू इट इन दैट वे ओके काहे ना आज जो 4टा बेले हमरो बूट कैंप स्टार्ट होची जो माने आंसर राइटिंग विषय किसी भी जान नांदी ए नेक्स्ट 4 दिन रे आज टू जोटा स्टार्ट हो 4टा बेले ओके 4टा रु 5टा 5:30 6टा में देखिकी ओके बिकॉज़ राइटिंग भी रहिबो से तरे सो से बूट कैंप रे बेसिकली मु जहा रिक्वायरमेंट अछि आंसर राइटिंग रो इन दिस 4 days ओके सेटा आपनकर पूरा क्लियर हे जिवो ठीक अछि। जो माने इंटीग्रेटेड बेस्ड स्टूडेंट अछि अपन एवरीडे अपन यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू राइट द आंसर द मॉडल आंसर भी ता संगे रहउ किंतु एई केस रे एठी हमें कोन करियो ना बेसिक जिंस ओडा मु कहबी काना के जडा फिगर टा केमती करबी कोन सेटा से माने जानना राइट। तो सेगुडा सब हमें डिस्कस करबा 4 दिन नै की स्लोली विल गो स्लोली ठीक अछि। लिखंतु फर्स्ट लेक्स फॉर आई दिस इज नंबर 1 हैला लॉ ऑफ द फोरम ता माने कोन जोटी केस टा ट्राई होउची ओके सेही जगह रे ही ओके आपणकर तार से जो कोर्ट
जो थरे सेटा ट्राई होउची केसटा जो चली जो कोर्ट रे सेही कोर्ट रो जहाँ लॉ से माने फॉलो करछंती सेही लॉ ही फॉलो होबो तो आमे कहूछु कोन एविडेंस लॉ इज लेक्स फॉर आई ठीक अछि एविडेंस लॉ इज लेक्स फॉर आई मींस जोठी ट्राई होउची सेठी सेही कोर्ट को एविडेंस लॉ को फॉलो करछि इंडिया रे जदी ट्राई होउची ताले इंडियन एविडेंस एक्ट होबो किबा भारतीय साक्ष्य अधिनियम होबो ओके सो ताले इलस्ट्रेशन टा भी देखंतु if a contract dispute is tried in an Indian court, Indian procedural laws like the BSA apply, even if the contract was made in England. Okay, kahi kana case ta to India re hochi na, contract ta hichi England re, ठीक अछि, but case ta India re hochi, so it is lex ferens. बुझि पारले, एटा basic concept, right? Not exclusively related to evidence laws, it is related to mostly all the laws. Okay, mostly all the laws except certain exceptions like admiralty laws, laws of the sea, laws of the ocean. सेठी टिके एटा अलगा रहिबो ठीक अछि तो एनीवे एटा हला नंबर 1 एटा लिखि दियंतु एबे ही लिखि दियंतु सेटा बेटर हबो पीडीएफ टा क्लास परे मु ग्रुप रे दे देबी ग्रुप रे माने ऐप रे दे देबी हला बट प्रॉब्लम हला कि सेटा फुनी आपन को एक्स्ट्रा टाइम नबो ओके तो लिखंतु मो संगे रे देयर आर अराउंड 25 वी विल कंप्लीट फास्ट ओके सो तापरे नंबर 2 को आसंतु लेक्स लोसाई डेलिक्टी लेक्स लोसाई डेलिक्टी आ माने कोन ओके जो जगह रे कॉज ऑफ एक्शन की क्राइम टा की टॉर्ट टा कमिट हेज ओके सेही जगह रे को लॉ टा आपनकर कार्यकारी होछ फॉर एग्जांपल गोटे अमेरिकन आसी की इंडिया रे गोटे मर्डर करछ तो एठी कोन ता ऊपर अमेरिकन लॉ लागिवो ना इंडियन लॉ लागिवो ऑब्वियसली इंडियन लॉ लागिवो काहे कि ना क्राइम से कला इंडिया रे ओके तो ताको रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ बीएनएस ता ऊपर लागिवो नॉट द अमेरिकन लॉ से जा भी हो ओके सो लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द टॉर्ट और द क्राइम वाज कमिटेड ओके तो जो जगह रे क्राइम टा की टॉर्ट टा कमिट हेची सेही जगह रो सब्सटेंटिव लॉ कोन अछि सेटा इंप्लीमेंट हबो ओके so illustration re if a murder is committed in Delhi substantive criminal law applies even the accused is from Mumbai amaro ethi kono criminal law is same all over India ठीक अछि तो एटा देश को हेले दिल्ली बॉम्बे रे एकाई मर्डर करले एका प्रोविजन रे पसिबो ठीक अछि तो एटा बेटर इलस्ट्रेशन हबो जोडा मु कहली अमेरिका रो ओडे अमेरिकन सिटीजन ओके सिया आसी की मर्डर करची एठी ओके आउ एठी ताको ट्राई करा होची सो ही विल बी बेसिकली ट्राइड अंडर इंडियन लॉ ठीक अछि तो जोठी जो कमिट हे की क्राइम टा ओके सेठिकार लॉ आपनकर that law will be used so that is lex loci delicti बुझि पाले तापरे थर्ड टा को दो so as I'm explaining you write it down ताले टाइम भी सेव होबो नले फुनी एटले पीडीएफ अपलोड होबो आपण फुनी आधा घंटे की घंटे नै की ताको लिखिबे ओके तो सेटा फुनी आधा घंटे की घंटे नष्ट होबो नष्ट होइथि पई होबो काहे ना सेटा हमें एबे भी कर दे परिबो तो सेई जो घंटे आपण लिखि तांते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखि देबे बहुत लाभ होई जो आपण ओके जोटा भी आपण सरला सपोज बीएनएस टा सर सारी लेबे तेणु बीएनएस टा जो माने करिसेंती पूरा बीएनएस टा सारी चंदी से माने नाउ यू स्टार्ट डूइंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ बीएनएस ओके और इंडियन पिनल कोड टा आपण करिया स्टार्ट कर दियंतो बुझ पारले तो नेक्स्ट नंबर 3 के आसंतु एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेन सीरिया एटा जनरली मेन सीरिया जोटा हमें कहूछु ना एटा हला तार एक्चुअल हमें मेन सीरिया कहि दोछु जोटा कि आगुरु भी देइछ एटा बट दिस इज द एक्चुअल लैटिन मैक्सिम जोठु आपण को मेन सीरिया टा नियाइछ ओके त माने कोन होची ओके एन एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस देयर इज अ गिल्टी माइंड तेनु क्रिमिनल लॉ रे आपण के एविडेंस हिसाब रे आपण गिल्टी माइंड टा प्रूव करियार अछि ठीक अछि सो दैट इज वेरी इंपोर्टेंट अदरवाइज you know it will not be possible to prove a crime रे इंटेंट टा द क्रिमिनल माइंड टा सेटा दरकार अछि सेटा एस्टैब्लिश होबार अछि किसी गोटे मैलाफाइड इंटेंशन क्रिमिनल इंटेंशन रे गोटे कामटे करछि बहुत जगह रे भूल हो जाए इनोसेंट मिस्टेक हो जाए ओके किंबा
सिचुएशन एमती थाए कि सी गोटे आउ गोटे कौन ट्राए करथिबो किंतु हबो आउ गोटे ठीक अछि सो वेदर देयर इज ए गिल्टी माइंड ठीक अछि ना सपोज आपण यू नो जस्ट किछि गोटे यू आर डूइंग सम एक्टिविटी ओके आपणकर लेट्स से गोटे नुआ पैकेट रु पेन बाहर कला बेले आपन फ्रेंड आपन पछरे ठिया हिचन देखुछन कोनटा आपन बाहर करछन तो आपन नुआ पेन टा बाहर कले ओके आपन एल्बोटा कोहन इटा जल्दी आपन बाहर करदेले सेटा तांग मुहरे बाजी गला आपन कोन तांग मुह को बाडे पे चाहुतले चाहु नथले इंटेंट आपन को नथला ओके तो सपोज ही वांट्स टू फाइल और प्रेस क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट यू ठीक अछि तो सेठी कोड देखिबे आपनकर मेंस रियाटा थिला कि नाही राइट सो एक्सप्लेनेशन रे लिखंतु इट इज एसेंशियल फॉर एस्टैब्लिशिंग क्रिमिनल लायबिलिटी एग्जांपल आपण किछि भी नहीं परिबे पर्सन हु एक्सीडेंटली हिट अनदर विथ स्नीजिंग व्हाइल स्नीजिंग may not be guilty unless intention or knowledge is shown हैला एडा हला नंबर 3 तापरे नेक्स्ट आसंतु नंबर 4 एटा बहुत जगह रे आपण पढिथिबे रेस इप्सा लॉक्विटर ओके एविडेंस लॉ रे एंड अदर लॉज रे भी दैट मींस द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ ताको आ किछि एक्सप्लेनेशन दरकार नै सेटा आपण कोर्ट सामने रखि देले कोर्ट भी निजे बुझिबे माने कोन ये कोन काकू करस्पोंड करूछ ठीक अछि सो एक्सप्लेनेशन कोन दोछि से प्रिजम्पशन ऑफ नेग्लिजेंस इन सिविल और टॉर्ट केसेस तो बहुत गुड़े आपण एग्जांपल्स देखिबे सेतरे न्यूज रे सबले आउथिबो कोन ना से जो पेशेंट रो ओके बहुत सीरियस कंडीशन हैला कि डेथ हैगला कोन पई ना डॉक्टर भूल रे तांकर किछि सर्जरी इंस्ट्रूमेंट हैला स्कैल्पेल हैगला कि किछि सीजर्स हैगला सेटा कि कॉटन हैगला सेटा भूल रे छाडी दिचंदी पेशेंट रो पेटरे ओके ताको स्टिच कर दिचंदी राइट सो सेटा इलस्ट्रेशन रे से देछि ए पेशेंट इंस्ट्रूमेंट लेफ्ट इनसाइड आफ्टर सर्जरी क्रिएट्स प्रिजम्पशन ऑफ नेग्लिजेंस बाय द सर्जन ठीक अछि सो ऑब्वियसली एटले कोर्ट सामना को सेटा जीवो कि से डेथ कोन पय हैला ना एति की तुळा बाहरला गोटे स्कैल्पेल बाहरला गोटे सीजर बाहरला तो कोर्ट ऑटोमेटिकली ओके एटा रेस इप्सा लॉक्विटर मींस कोर्ट सेटा बुझी पारे ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स लाइक नेग्लिजेंस है सर्जन टू देन सर्जन जदि सेठी सी तापर ताकर जहा स्टैंड नेबे कि एमती हैला सेमती हैला ओके निजो को डिफेंड करिवे से अलग होता देन कोर्ट विल डिसाइड वेदर ओके ही इज एक्चुअली guilty of negligence or not but presumption आसीजिवो negligence ओके बाय द सर्जन बुझी परले एटा हैला फोर्थ इंपोर्टेंट कांसेप्ट जोटा आपन को जानिबार अछि तापरे फिफ्थ क्वेश्चन दो ignorantia facti excusat ignorantia juris non excusat very important okay that is ignorance of fact can be excused गोटे पर्टिकुलर जिनस गोटे फैक्चुअल जिनस मु जानिनी ताकू नै कि मु गोटे काम कली जोटा कि भूल हैला सेटा मे भी कोर्ट एक्सक्यूज कर दे परिबे इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट फॉर एग्जांपल मते टैक्स दबार थिला ठीक अछि तो लास्ट ईयर पर्यंत एति कि थिला कि मु जदी वर्ष को 10 लाख टका इनकम करछि मते 10% टैक्स दबार अछि फॉर एग्जांपल सेटा नेक्स्ट ईयर माने एई वर्ष टू चेंज हो जाइछि कि जदी 10 लाख अर्न करछि ताले मते 25% टैक्स दबार अछि ठीक अछि सो से फैक्ट टा मते जणा नै तो मु जेंती दिए मु धरन 10 लाख इनकम कली तो मु से हिसाब रे 10% दे देली लास्ट ईयर भी देथिली सेती सेम इनकम एथरो भी सेम इनकम हैला सेती दे देली तापर मते नोटिस आसला इनकम टैक्स आपण 10% रे देले 25% दा तो सेटा मु कोर्ट सामने रे सेटा कहि परिबी कि मु जानि नथली फैक्ट टा जानि नथली किंतु यदि मु टोटली टैक्स ही देइनी ओके आउ तापर कहबी ना एमती गोटे अछि प्रोविजन कि मते टैक्स दवा पड़ियो सेटा मु जानि नथली इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड ओके सो एक्सप्लेनेशन कोन वन मे अवॉइड लायबिलिटी फॉर ए फैक्चुअल मिस्टेक तेनु एई केस रे कोन हो ताले से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कहबो कि कोर्ट कहबे ठीक अछि यू हैव पेड फॉर 10% ओडा कि लास्ट ईयर तो एति दिन भीतर हम बाकी पे कर दियो ओके सो इट कैन बी एक्सक्यूज्ड बट ignorance of law cannot be excused okay से भी से एग्जांपल देछि इलस्ट्रेशन रे देखंतु मैन बाइंग स्टोलन गुड्स अननोइंगली चोरा जिंस जने किनुची परंतु गोटे नुआ बाइक टे मु किनली ओके 40% डिस्काउंट रे मु खुशी कि दो किन देली परे जना पड़ला सेटा चोरी चोरी रो बाइक एक्चुअल ओनर पुलिस की नहीं जेतला सी पहुंचला ओके
तो मु सब बिल फिल देखैଥିଲି मु एतिकी टंकार ए लोक किनिची व्हाटएवर ओके सो सेठी liability I can escape liability right so आउ जदि आपण इग्नोरेंस ऑफ लॉ क्लेम करिवे तारो किछि लाभ नै जेमति कि आपण टैक्स पे करिवेनी ओ तापरे कहबे कि अच्छा आपण टैक्स दबार थिला मु जान नथली ओके so ignorance of law cannot be excused so claiming ignorance of law for not paying tax is not excused okay so this is your concept number 5 now come to concept number 6 eta hala one of the fundamental principles of natural justice oddity altum partum ठीक अछि oddity altum partum कोन here the other side ठीक अछि जते बेले गोटे केस होची जे जाउ जो केस भी हो क्रिमिनल सिविल व्हाटएवर कोर्ट हैज टू हियर बोथ साइड्स ठीक अछि oddity altum partum तेनु नेचुरल जस्टिस रो भी सेम जिंसडा कि जहाँ जदि जनक ऊपर किसी गोटे एलिगेशन आछि तो ताकू भी स्कोप दबार अछि समय दबार अछि अपॉर्चुनिटी दबार अछि से कहबो कि यू नो ता साइड ऑफ द स्टोरी कहबो इफ यू ओनली हियर वन साइड एंड गिव ए जजमेंट ताले किछि लाभ नै दैट इज कॉल्ड ए कैंगारू कोर्ट जानछन तो कैंगारू कोर्ट माने कोन कैंगारू कोर्ट माने कि से यू नो देखैया भाई खाली कोर्टटा बट सेथरे गोटे पार्टी रो किछि गोटे साइड रो किछि सुगा ही जाय राइट दी साइड रो सुनिया पैसे करंती सेटा बट गोटे पार्टी रो से सुनंती नि टोटली दीटा एग्जांपल हम नै परिबा यू नो अबाउट द खाप पंचायत पूरा नॉर्दर्न इंडिया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया केते जगह रे अछि हरियाणा रे मेनली ओके एंड अदर प्लेसेस इन नॉर्थ इंडिया हमर तो एठी एते बेसी नाही ओडिसा रे थैंकफुली तो से खाप पंचायत माने कोन करंती तो सपोज एबे तो बहुत कमी गलानी आगुरु तांकर हिंदू लॉ रे आपण पढिबे कि से माने कोन दे बिलीव इन यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ गोत्रम ओके गोत्र ठीक अछि एबे भी ट्रेडिशनल फैमिलीज रे आपण देखिबे जातक तो जा पढिबे पढे मैरिज कथा कहूची से गोत्र देखंती प्रथम जदि सेम गोत्र रहला से माने मैरिज करिवे ठीक अछि तार टेक्निकलिटीज की गले गोत्र कोन ना बेसिकली जो ग्रेट सेजेस थिले ऋषि मुनि थिले हु आर बेसिकली ओके तो सब गोत्र जुड़ा तांको टू डिराइव भारद्वाज गोत्र हे गला कश्यप गोत्र हे गला एंती दे वर एक्चुअली सेजेस ऋषि मुनि थिले ओके आउ ये तांकर लाइन ऑफ हायरार्की रे कि डिसेंडेंसी रे आसुच राइट तो जोटा कि प्यूरिस्ट कॉन्सेप्ट हिंदू लॉ रे अछि कस्टमरी हिंदू लॉ रे वैदिक लॉ रे कि एका गोत्र रो मैरिज हे परिबन तो से माने कोन कंसीडर करंती गोटे विलेज की गोटे कम्युनिटी से गोटे गोत्र ठीक अछि तो ता भीतर मैरिज हे व्हाटएवर जदि मैरिज हैला कि आउट ऑफ कास्ट मैरिज हैला कोन से खाप पंचायत रो स्पेशली हरियाणा रे जिन सोडा बहुत होतला से माने कोन करिवे ना तांको मार देबे बहुत गुरे मूवीज भी हिचे ऊपर ऑनर किलिंग जाकू कहउछंती एसए रे पढि सरछि बे क्वेश्चन ओके ओजेस रे एसए रे पढि सरछि तेनु सेठी कोन हुए दीटा पार्टी की आनिबे कोन तुमर कहर अछि को तुमर कोन कहर अछि को बट ऑलरेडी डिसीजन है सर दैट इज कॉल्ड ए कांगारू कोर्ट माने सेठी हो फेयर हियरिंग रो चांस न थाए गोटे साइड की आउ की कांगारू कोर्ट्स करंती लेफ्ट विंग वाला ठीक अछि माने नक्सलाइट्स माने जेतेबेले नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट हैला नक्सलबरी रे वेस्ट बंगाल रे सेतेबेले कोन होतला से जमींदार मानु को किडनैप कर देबे आ गोटे कैंगारू कोर्ट कर देबे ये लोक ए समस्त जमीन नहीं जाइछि ओके ऑफ कोर्स से माने बहुत ओके दे हैव डन लॉट ऑफ कमिटेड लॉट ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट द पेजेंट्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स एक्सेट्रा ओके तो तापर ठीक अछि तो कोर्ट माने जो तांकर जो रेड कोर्ट ओके लाल कोर्ट डिसाइड कला कि पीपल्स कोर्ट डिसाइड कला आको एलिमिनेट करा जाउ तो सेठी जंग जंग ताको मार देबे ओके so oddity altum partum means hear the other side as well and this is one of the fundamental principles of natural justice आपण concept of natural justice टा jurisprudence रे पढिबे ठीक अछि तापरे illustration a judge dismissing a case without giving the defendant a chance to present evidence violates this principle सुनिबे नै किछि देखो जा कहूछ कोन कहूछ ओके तापरे पॉइंट नंबर 7 को आसंतु concept number 7 nemo judex in causa sua okay which means no one should be a judge in his own case सेते आपण देखिबे रिक्यूजल्स बहुत हुए सपोज आपण गोटे एडवोकेट अछंती आपणकर केते बहुत गुडे क्लाइंट्स अछंती आगु को जाई कि आपण
जज हे गले हाई कोर्ट रो सुप्रीम कोर्ट रो आपण जेतले जज हेले गोटे केस बहुत वर्ष होला चल जोटा कि आपण चेंबर रु स्टार्ट हेतला यू आर द एडवोकेट ऑफ वन ऑफ दोस क्लाइंट्स एबे सेही केस टा आपण को बेंच पाखरे पड़ला तो आपण को करिवे दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहना सेही लोक आगुरु मो क्लाइंट थिला ओके मु केतेटा डिटेल्स और केतेटा सीक्रेट्स भी जानी छी जोड़ा कि हमरो ओके कम्युनिकेशन बिटवीन लॉयर एंड हिज क्लाइंट भितर प्रिविलेज कम्युनिकेशन भितर कवर्ड होची प्लस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी रहउची ओके तेनु जज माने कोन करिवे से माने रिक्यूज कर देबे निजो RECUSE माने आउ को जज को ए केस रे दियंतु कि आउ को बेंच को ए केस टा पठा ओके तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बट अनफॉर्चुनेटली बहुत गुडे जगह एमती भी हुए कि ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस कि ड्यू टू थ्रेट्स जजेस रिक्यूजल नियंती सबुटु बेस्ट एग्जांपल हला लास्ट ईयर जेतेबेले लास्ट टाइम जेतेबेले वेस्ट बंगाल रे ताकर इलेक्शंस हेतिला तो सबुबेले वायलेंस हुए वेस्ट बंगाल इलेक्शंस रे एते लोकों को माने आउ माने गोटे पर्टिकुलर पार्टी रो कैडर को ताको वुमेन कैडर को संगे एते एट्रोसिटीज हेतिला जोड़ा कि माने मीडिया रे बहुत क्लियर थिला बट गोटे परे गोटे गोटे परे गोटे हाई कोर्ट जज ताको स्टेट रो से माने निजो को रिक्यूज करी चलले केस ताको सामने रे आसीबो नै रिक्यूजल राइट सो काहेकि ना से जानचोंती से मान जदी से केस टा नेबे ओके ताले ये जो रूलिंग पार्टी रो गुंडा माने अछंती से माने बहुत हैरान करियो ओके so that is also something which we have to see so no one should be a judge in his own case जोटी आपण conflict of interest आसुची सेठी for the for to ensure that it is impartial सेठू आपण को हटि जिवार अछि so explanation कोन it ensures impartiality in judicial proceedings illustration a judge must recuse if he has personal interest in the case okay एटा हला point number 7 तापरे point number 8 एटा बहुत important काई important आगु को हमें पढ़िबा जदि गोटे विटनेस तार स्टेटमेंट दउची तार स्टेटमेंट रो दि तीनटा पार्ट अछि गोटे पार्ट तार भूल अछि मिछ प्रूव हे गला से तीनटा जिंस कहला तीनटा जिंस भितरु गोटे मिछ प्रूव कर देला डिफेंस ताहले एबे बाकी दीटा जिंस मिछ ऑटोमेटिकली प्रूव हे गला कि मिछ न भी प्रूव हेले ता ऊपर आउ ता क्रेडिबिलिटी टा इंपीच हे गला ठीक अछि कोर्ट आउ ता ऊपर ते रिलाय करि परिबेन तेणु अदर जुरिस्डिक्शंस रे अदर जोटी की यूएस और यूके लॉज रे ओके जदी फाल्सेस इन यूनो फाल्सेस इन ओमनिबस यूनो माने कोन वन ओके ओमनिबस माने कोन मेनी ओमनी इज मेनी ओके सो फाल्सेस इन यूनो फाल्सेस इन ओमनिबस माने थरे जदी एई कॉन्टेक्स्ट एविडेंस रो विटनेस थरे जणा पड़ला ये मिछ कहिची बुलबाल कहूची ताले तारो क्रेडेंशियल अमेरिकन लॉ करिकर से जहाँ भी कही एंटायर टेस्टिमनी से माने आउ ताऊ खातिर करिवेन इंडिया रे सेटा कांसेप्ट नो इंडिया रे जदी गोटे मिछ कहिची बाकी दीटा जिंस जदी अलगा एविडेंस अछि कॉरबोरेट हे जाउची ताले ताकू एक्सेप्ट करा जाई परिबो ठीक अछि बट देयर हैज टू बी अदर इंडिपेंडेंट एंड कॉरबोरेटिव एविडेंस से जा कहूची ओके सो एक्सप्लेनेशन देखंतु इफ ए विटनेस लाइज ऑन वन मटेरियल पॉइंट देयर होल टेस्टिमनी मे बी डिस्कार्डेड ओके बट इंडिया रे एटा पूरा सेटा फॉलो हुए नी ऑब्वियसली ता क्रेडिबिलिटी इंपीच हे गले ऑब्वियसली कोर्ट एते सीरियसली ताको नेबे नी किंतु से जा कहूची जदी तार अलगा प्रूफ अछि इंडिपेंडेंट प्रूफ अछि और सेटा प्रूव हे जाउची ताले इट विल बी केप्ट ओके तो इंडियन व्यू एटा बहुत इंपोर्टेंट केस जोटा हम देखिबा स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस कृष्ण गोपाल एथरे कोन कहला इंडियन कोर्ट्स डू नॉट स्ट्रिक्टली अप्लाई दिस प्रिंसिपल एथरे कोया गला कि जे जदी से जणा पड़ला कि से तीन चारटा कि पांचटा जिंस कहिची ता भितर गोटे जिंस मिछ ओके भूल ताले बाकी चारटा जिंस इंडिपेंडेंटली देखो जदी सेगुडा भी ठीक अछि ताले तारो किछि एविडेंशियल वैल्यू रहिबो ठीक अछि एटा हला 8th कांसेप्ट जोटा हमको जानिबार अछि ओनर्स प्रॉपर्टी एटा हम डिटेल्स डिस्कस करि सरछु ओके नथिंग टू डिस्कस हियर जस्ट गो थ्रू इट देयर इज अ बर्डन ऑफ प्रूफ एक्सप्लेनेशन द पार्टी हु asserts मस्ट प्रूव ओके सो in a civil suit the plaintiff must prove that contract was breached okay so it are both details re okay owners probandi that we have studied examples ne ki bana padi right next number 10
রিয়েস মানে কোন accused or the defendant. Okay, so refers to the person against whom the legal action is brought. So it is just खाली term टा आपको जानिए ना. Then this is important. The corpus delicti means the body of crime. Body माने dead body नुह. वो सीधा कोटे example है पर है. माने total evidence. जो evidence टा proof करती कोटे crime ही ची. ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଣକ ମର୍ଡର ହେଇଛି କେମିତି ପ୍ରୁଫ କରିବେ ତାର ଡେଡ ବଡି ଥିବା ଦରକାର ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଡେଡ ବଡି ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ ତାହେଲେ ଦେଖିବା 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାକୁ ଡେଡ ବଡି ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରିଜ୍ୟୁମ କରିବେ ସେ ତାର ଡେଥ ହେଇଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ସୋ ଏନି forgery for example you take forgery ର corpus delicti କଣ ହବ original document false document ଠିକ ଅଛି ଦିଟା ଯାକ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ that is the corpus delicti so concrete evidence that a crime has been committed that is corpus delicti okay ଯେମିତି କି ଆମେ କହିଲୁ illustration ଟା ଦେଖନ୍ତୁ dead body in a murder case is corpus delicti okay next mens rea ଆଉ actus reus so mens rea already we have seen तार actual पूरा maxim टा भी हमें देखिलु so it is guilty mind okay that is the mental element in committing a crime right so जदि आपण theft proof करिवे ताले आपण proof करे पड़ियो ता intention to permanently deprive the owner मोटे गाड़ी टे किनिछि जण ताको चोरी करिया पे चेष्टा कला तो धरा पड़ला तो हमको ए प्रूफ करे अछि से गाड़ी नहीं जाउतिला he wanted to permanently deprive me okay or the owner तो ताके नहीं कि से बिकी था कोन करता ना सपोज मते न पचरी कि मो फ्रेंड ओके जस्ट मते शॉक दवा पई से मो चाबी नहीं कि गाड़ी नहीं कि पळेला राइट मु एफआईआर हरिका करली तापर जानली मो फ्रेंड नहीं ठीक अछि एंड मो बेस्ट फ्रेंड तणु जानची से केबे भी मो जिंसटा चोरी करिवन तेणु सेठी स्टिल देन मु जदी ता अगेंस्ट रे थेफ्ट केस कली ठीक अछि कोर्ट में भी ताकू अलगा किछि जिंसो पई ताकू यू नो ये करि परिबे बट थेफ्ट पई जनरली ओके ताकू कन्विक्ट करिवेनी कारण ता इंटेंशन ही नथिला परमानेंटली मो गाडटा को नै जिवार सेमति जस्ट गोटे मते डरौतला कोन व्हाटएवर ओके मेन सीरियस सहित हला एक्टस सीरियस दैट इज द गिल्टी एक्ट ठीक अछि that is the actual thing which is done the physical act of omission or commission ठीक अछि omission भी होबो ओके commission भी होबो जा भी physical act गोटे जिंस आपण करूचंती सेटा हला commission गोटे जिंस आपण करू ना जोटा आपण करिया कथा सेटा हला omission ठीक अछि सपोज आई एम अ डॉक्टर मु जानि छी पेशेंट टाकू इमीडिएटली इंजेक्शन टा जद न देबी आरो डेथ हो ठीक अछि मु इंजेक्शन देली राइट so I committed a omission here I should have given the injection देली बुझि पाले omission or commission so actually hitting someone constitutes act as serious in assault सेटा से एग्जांपल देछि okay so से जो guilty act must be backed by a guilty mind otherwise criminal liability proof करी होबनी जेमते हमें से एग्जांपल लेलु पेन बाहर कला बेलू पछरे जो सांगटी आइतला ता मुहरे बाजी गला ता नाक फाटी गला सी यदि कोर्ट रे केस करिवो ताले कोर्ट सेटा जानिबे कि एटे अरे मेंस रिया किछ नथला ये पेनटा बाहर करथला ये पछरे टी आइतला ता मुहरे बाजी गला बुझि पाले सो मेंस रिया एंड एक्टस रियस तापरे 14 15 देखिबा ab initio means from the beginning from the inception आपण जेंति कहउचंदी हमरो part 3 of the constitution fundamental rights any law any ordinance any order that has been passed which violates part 3 of the constitution is okay कौन invalid okay or void ab initio take an example during covid कटक कलेक्टर सेतल जे थिले से गोटे ऑर्डर बाहर कले कि जेते पब्लिक सर्वेंट्स अछंती कटक डिस्ट्रिक्ट रो ओके जो माने सु काम ऑल द पब्लिक सर्वेंट ना गवर्नमेंट सर्वेंट्स mandatorily have to take the covid vaccine ठीक अछि
ସମସ୍ତେ ତ ନଉଥିଲେ ଅବଭିୟसली, ବଟ୍ ଧରନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନେବା ପାଇଁ, ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ହଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏହା କରିପାରିବେ କି ଯେମିତି କି ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି କୋଭିଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏଠିକି ଯାଇପାରିବେନି, ସେଠିକି ଯାଇପାରିବେନି, ଏହା କରିପାରିବେନି, ସେୟା କରିପାରିବେନି। ବଟ୍ no one can force me, okay, to take or not take whatever. ଠିକ ଅଛି, ଅର୍ଡରଟା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିୟଲାଇଜ କଲେ, ସେଟା ନେକ୍ସଟ ଡେ ଅର୍ଡର ୱାଜ ଟେକେନ୍ ବ୍ୟାକ୍। କାହିଁକି ନା ସେ ଅର୍ଡରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇଟ୍ ୱାଜ ନଟ୍ ଏ ଆକ୍ଟ, ଲେଜିସ୍ଲେସନ ନଥିଲା, ଅର୍ଡର ଥିଲା, ସେଟା ଅଫିସିଆଲ ଅର୍ଡର, ବଟ୍ ଭାୟୋଲେଟ କରୁଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କୁ। ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟା ନେବି, ମତେ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ ହେଇଛି, ମୁଁ ମନା କରୁଛି, ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବିନି, ଆଇ ରିଫ୍ୟୁଜ ଟୁ ବି ଟ୍ରିଟେଡ। ଯଦି ସେଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟାଜିୟସ୍ ଡିଜିଜ ଅଛି, ମୋଠୁ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଯିବ ଲୋକଙ୍କୁ, ମତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ରେ ପକେଇଦବ, ଘରେ ରୁହ, ସେଠୁ ଆଉ ତୁମେ ବାହାରି ପାରିବନି। ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନଟ୍ ଫୋର୍ସ मी कि तुम्हें यही इंजेक्शन नियो, या खाओ, से खाओ, दैट कैनॉट बी डन, इट विल वायलेट माय फंडामेंटल राइट। ठीक अछि, तो दैट वाज टेकन बैक, बट सेटा आपण फंडामेंटल राइट्स रे आर्टिकल 19 अंडर रे पढिबे, एक्सेप्शंस अछि, सेम जिंस सेही टाइम रे केते बळे हमर जेते बळे कोविड चलथिला, गवर्नमेंट पुनी रेस्ट्रिक्शंस कर देथिला कि नहीं आर्टिकल 19 ऊपर। ठीक अछि, फ्री मूवमेंट, जुआड़े इच्छा जाई परिबी, नो, बिकॉज आर्टिकल 19 रे कोइछि कि सेडा सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, बुझि पाछन। सो एब इनिशियो माने हैला फ्रॉम द बिगिनिंग। सो एनीथिंग एग्जांपल हैला, एनीथिंग, एनी लॉ, एनी ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, जहाँ भी हो, if it is against the fundamental rights part 3 against जाउची, ताहले सेटा valid, invalid or void ab initio. Okay, so explanation रे कौन देला, something considered void or valid from the start, ab initio. Okay, so illustration देला, an illegal search makes all evidence obtained void ab initio. Indian law हिसाब रे कहूनी, एटा अमेरिकन लॉ हिसाब रे कहूँ। यू नो अमेरिकन लॉ रे प्रूफ टा केमिति अणा हिच, स्टेट प्रूफ टा को आनी ची केमिति, ओके, एविडेंस टा को आनी ची केमिति, सेटा बहुत इंपोर्टेंट। तर मोर गोटे लैपटॉप अछि, से लैपटॉप रे बहुत गुडे डाटा अछि, गोटे क्राइम रो, से लैपटॉप टा कोठी अछि, मो कार भीतर अछि, कार लॉक्ड अछि, पुलिस पाखरे सर्च रो वारंट नहीं, कार सर्च करिया पे वारंट नहीं, यूएस रे तथापि से कौन कले ना, भांगी मो लैपटॉप नहीं गले, से लैपटॉप रो जहाँ भी सब एविडेंस अछि, जहाँ भी अछि रिलेटेड टू दैट, दे कैन नॉट प्रेजेंट इन कोर्ट, कोर्ट मना ही कर दो, एटा इलीगल सर्च, भांगी पस्तर। इंडिया रे सेमती नहीं, इंडिया रे जेमिति जो वे रे भी, इफ इट इज फॉर द पब्लिक गुड, कोर्ट विल एक्सेप्ट, कोर्ट अवश्य एटा देखियो एटा सत कि नहीं, ठीक ठाक कि नहीं, ओके, बट इट विल बी एक्सेप्टेड। तेणु एठी जो कहूची, इलीगल सर्च मेक्स ऑल एविडेंस obtained void ab initio, this is American law, not Indian law. Indian law रे if it is for the public good, it can be accepted. ओके, कहीं ना आमे जो टाइम्स रे रहउचु, इट बिकम्स डिफिकल्ट, बट यूएस रे बे से माने बहुत लॉ चेंज कर देलेनी, स्पेशली ट्रम्प करके आसला परे। आ आपण कहबे कि टेररिस्ट ता घरे नहीं, ता घर भांगी की पसी की आमे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी कि आ गोटे टेररिस्ट अटैक टे स्टॉप करिवु। ठीक अछि, तो एटा बुझंतु, दिस इज ओनली इन कोर्ट। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कौन करती, ये जो ताको प्रूफ रा मिले ए सब जिंस रु, से माने सेथरु एक्शन नियंती। ठीक अछि, तो सो एनीवे, इलीगल सर्च मेक्स ऑल एविडेंस obtained void ab initio, this is for American law. इंडिया रे हमें कहि परिबा, एनी लॉ, रेगुलेशन, ऑर्डर, व्हाटएवर रूल, if it violates fundamental rights, it is invalid or void ab initio. Okay, prima facie, एटा हमन बहुत तरह prima facie केसटा रे ऑन द फेस ऑफ इट, जहाँ से डायरेक्टली देखा जाउछ, ताको आपण कहउचंदी प्राइमा फेसी। ओके, तो मीनिंग कोन, एट फर्स्ट साइट और ऑन द फेस ऑफ इट। प्राइमा फेसी रा एक्चुअल मीनिंग हैला ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक अछि, तो इफ यू वांट टू राइट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन, एटा बहुत जगह रे आपण देखिबे प्राइमा फेसी। ओके, तापरे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कोन रहउची तार, इट इज सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश ए फैक्ट अनलेस रिबटेड। ओके, ऑन द फेस ऑफ इट जना पड़ची कि ए जिंसटा है, सपोज आपण घर को आछंती, नुआ पेंटिंग करछंती, आपण गोटे छोट पुओ की झियो अछि, आपण कांथरे देखछंती सब लेखा हिच, तो प्राइमा फेसी आपण कोन भाबे कि पिलाटा ही लिखिछ,
on the face of it at first sight without any investigation. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ଡାକି ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଘରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଏମିତି କରିଛି ନା ନାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା ସ୍କୁଲରୁ ସିଏ କରିଛି ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କି ଆପଣ ଜାଣିଲା ପରେ ତାପରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସିଏ କରିନି ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡଟା କରିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆଫ୍ଟର ୟୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ ଓକେ ବଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣଟା ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୋଲିସ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ପଚରା ହବ ତ ସେ କୁହନ୍ତି ଓକେ not publicly but you know prima facie এটা suicide case ଲାଗୁଛି prima facie এটা murder case ଲାଗୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ so that is prima facie at first sight on the face of it explanation କଣ ଲେଖିବେ ଆପଣ sufficient to establish a fact unless rebutted illustration ରେ for signature on a check is prima facie proof of fraud ठीक ଅଛି चेक ର टोटली देखिले ही जଣା पड़ जाଉଛି signature match କରୁନି so it is prima facie proof of fraud right तापर next लिखंतु inter alia and ex parte inter alia and ex parte so inter alia माने कोन among other things बहुत गुड जिंस अछि ता भितर किछिटा okay so it is used to introduce one of many facts जेंति गोटे क्रिमिनल को धरा हैला तो ता पाखरे 10टा वेपन मिलला एतरा हमें कहूछु the accused was found with weapons inter alia a pistol and knife means ता पाखे बहुत गुडे स्क्रू ड्राइवर थिला हैमर थिला ये थिला से थिला ता भितर पिस्टल और नाइफ भी थिला so inter alia means among other things ठीक अछि सेटा हला ता कांसेप्ट तापर एक्स पार्टी यू नो एटा आपण सीपीसी रे भी पढी जनरली भी हमें कहूछु एक्स पार्टी डिक्री एक्स पार्टी means not from both sides but only from one side so ex parte is from one side explanation कौन proceedings conducted without notice to the other party without notice in the sense other party रा involvement नहीं गोटिए पार्टी ओके ताको देगी डिसीजन नहीं हला illustration court passes an ex parte decree if the defendant does not appear defendant asuni total saman bhaman dela pare भी से asuni ताले ex parte decree okay will be passed by the court एटा भी सिविल लॉ रो कांसेप्ट सीपीसी रो res judicata and res sub judice okay the res judicata कौन a matter already judged okay so जो गोटे केस पूरा डिसाइडेड हे जाई ताकू आउ रीओपन करी हबनी provided the matter is the same the parties are the same okay आउ सेमिति कंडीशंस किछि चेंज हेनी a dispute between the same parties and same cause cannot be tried again lot of exceptions are there in cpc you'll study that and there are different types of res judicata also okay तापरे सब जुडिस आपण ए टर्म टाइप बहुत सुनथिबे कोन का गोटे कोन पचारिबे आपण अथॉरिटी की पुलिस वाला होंतु कि आपनकर ब्यूरोक्रेट्स होंतु कि पॉलिटिशियंस होंतु गोटे केस ऊपर पचारिबे कोन भाबुचंदी आपण सी कहबे ना मैटर इज सब जुडिस मु किछि कमेंट करिया पे चाहिबिनी ता माने कोर्ट अधीन रे अछि से मैटर टा कोर्ट डिसाइड करनांती तनो मु किछि एबे कहया पे चाहिबिनी ताको सब जुडिस आपण कहउछन सो मीनिंग हैला अंडर जुडिशियल कंसीडरेशन explanation है matter is still pending in court सेतबे आपण ताको ये करना मीडिया should not discuss the merits of a sub judice case ठीक अछि बट आजिकली मीडिया तो सब डिसाइड माने सब डिस्कस करू केस थाउ न थाउ unless there is exclusive and explicit order of the court कि एई डेट पर्यंत एई केस ऊपर कोनोसी मीडिया रिपोर्ट करिवेनी ताले जाई से चुप होके रहबे अदरवाइज दे विल रिपोर्ट ओके next 20 or 21 so non a factum okay non a factum means not my deed mu karini actually mo hatru heichi but mu jani ki karni ki whatever so that may be considered that I have not done it a plea that a document was signed by mistake okay बुझी पाले तो मते कहले कि एटा जनरली हुए ऑफिसर से कोन ऑफिसर्स रे कि हायर ऑफिसर जे से तो गोटे डॉक्यूमेंट पढ़ियार समय नते तो तांकर जे सेक्रेटरी की तांकर तळे जे थांदी जांकर रिस्पांसिबिलिटी सी पढ़ी की वेट करी की डॉक्यूमेंट ता तांको देबे आपण साइन करदो तो से यदि जानी सुनी कि भूल रे गोटे एमती जिंस दे देले जोटी तांको साइन करियार नथला ये साइन कर दिछे
ठीक है, so non a factum. A plea that document was not signed by mistake. So signing a deed, believing it to be a receipt, can be a valid plea. Okay, ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ receipt, କିନ୍ତୁ actually ସେଟା ଗୋଟେ deed. So ସେଟା okay non a factum ହିସାବରେ ସେଟା it can be valid. Court can take into consideration. Okay, 21 very very important. এটা underline ବି କରନ୍ତୁ, ଲେଖକ side ରେ important ବି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ. Okay, that is mutatis mutandis. Okay, that means with necessary change. ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ particular law କୁ apply କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ domain ରେ, okay, basic principle same ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାହା ଦରକାର change କରିବା କଥା ଆପଣ change କରିଦଉଛନ୍ତି. Okay, let's say central government ଗୋଟେ APMC model APMC act କରୁଛି. APMC କଣ? Agricultural Produce Marketing Committee. You know that agriculture is a state subject. तो अल्टीमेटली सेटा स्टेट को बनैया पे पड़िबो ताको स्टेट पे, किंतु सेंट्रल गवर्नमेंट गोटे मॉडल एक्ट कर दी, ठीक अछि. ठीक सेंति डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी गोटे कर दी. डिजास्टर मैनेजमेंट रे आवादा तो ता स्टेट को छाड़ देला, तापर स्टेट विल टेक इनटू कंसीडरेशन, स्टेट ताकर निजर स्टेट लॉ बनेबे. ओके, स्टेट जतले लॉ बनौजी ताको लागु जे मो स्टेट रे लेट्स से कोस्टल एरिया नाही, मो गोटे लैंड लॉक स्टेट, तेणु सेठी मु सुनामी घरिका तो मत किसी व्यवस्था करने दरकार नहीं, कोस्टल स्टेट नुह मोर, बुझिपारे. तेणु से माने चेंजेस करेंगे से. सो दे आर फॉलोइंग दैट मॉडल एक्ट which was recommended by the center, but mutatis mutandis means wherever necessary they have made the changes. तांको पाई जा दरकार से हिसाब रे चेंज करछन. So with changes okay made where necessary, like evidence act applies mutatis mutandis to arbitration proceedings. जोठी दरकार same concept use होची, but सेठी किछिटा जिंसो as per requirement of arbitration proceeding ताको चेंज करा हिच. Okay, so that is mutatis mutandis. तापरे नॉसिटर society. Okay, nocere society means a word is known by the company it keeps. A man is known by the company he keeps. Word is known by the company it keeps. माने गोटे word रो meaning और context जଣା ही पारुनी, जेते चेष्टा कले भी जे ट्रांसलेटर एक्सपर्ट आसी से भी बुझी पारुन जे कोन. तेणु सेतरे देखा होची ता पूर्व आ पर वर्ड कोन कोन कॉन्टेक्स्ट रे सेटा कुहा होची, तेणु से हिसाब रे तार इंटरप्रिटेशन करा होची. So word is known by the company it keeps. Okay, it aids interpretation of ambiguous words. Se word ro context ta kon. Illustration dela, in vehicles like car, trucks and bicycles a scooter may be interpreted as similar. Same type ro. ठीक अछि. Let's say गोटे foreign language अछि जोतरे एमती कि छोटे लिखा है. ठीक अछि. तो ये वर्ड टा कोन आमे जान पड़ना, एक्सपर्ट भी जानि पड़ना, किंतु एई तीनटा वर्ड कोन से जान पड़ते. ओके, एटी को होची कि very intelligent, affectionate हैला. मझी वर्ड टा 3 नंबर वर्ड जाना पड़नी. तो आपको आरो कॉन्टेक्स्ट नहीं कि कोड कोन भाबी से जा भी लिखाई थियो पॉजिटिव भी लिखाई थियो, काई कि ना पूरा कॉन्टेक्स्ट से ही लागुची वेरी इंटेलिजेंट एंड अफेक्शनेट. तो जेडी ଗୋଟେ नेगेटिव वर्ड पसिବାର चांसेस कम, बुझी पाले. तो सिमिलर टाइप रो वर्ड. तेणु a word is known by the company it keeps. If you are unable to interpret a word ताले ए हिसाब रे ताको कराबो, राइट. नेक्स्ट 23 को आसंतु. एक्सप्रोशियो unius a exclusio ulterius means express mention of one excludes others. आपण पर्टिकुलरली एक्सप्लिसिटली गोटे जिंस जदि मेंशन करूचंती ता माने ऑटोमेटिकली जो जिंस गुडा मेंशन हेनी से गुडा हटि जाउची. ओके, तो एक्सप्लेनेशन देखंतु. इफ लॉ मेंशन स्पेसिफिक टर्म्स अदर टर्म्स आर एक्सक्लूडेड, राइट. If law provides tax relief only to senior citizens,
others are excluded किंबा गोटे लोक ना रे कहि एटा ए जो रिलीफ टा एक्स वाई जेड को दिया होची ताले एबीसी सेतरे इंक्लूडेड नुह केना क्लियरली एक्सप्रेसली सेटा लिखा है कि ओनली एक्स वाई जेड को रिलीफ टा मिलला बुझ पाले सो दैट इज 23 लास्ट डेटा यूपीजस इबी रेमेडियम एटा बहुत इंपोर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स रे हमें जोटा कहू आर्टिकल 32 ओके जोटा कि बाबा साहेब अम्बेडकर कहते सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 okay that is based on this maxim where there is a right there is a remedy आपण 1000 प्रकार राइट दे दियंतु राइट टा जदी वायलेट हे गला आपण ताको रेमेडी केमती करिवे हाउ विल यू फाइट फॉर योर राइट्स जदी आर्टिकल 32 रहिबोनी ताले फंडामेंटल राइट वायलेट हे गला आपण कोन करिवे ओके पढ़ले आपण जानिबे सेटा 226 अंडर रे भी आपण जाय पारिए बट 226 रो फंडामेंटल राइट्स और अलगा लीगल राइट्स बहुत तरह एम्बिट टा बहुत बड़ ठीक अछि बट सुप्रीम कोर्ट को जिबार डायरेक्टली आर्टिकल 32 आपण को ओके से पावर टा दोची से राइट टा दोची राइट तेनु एडा गोटे एग्जांपल आपण नै परिबे यूपी जस्ट इफ रेमेडी मींस वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी और अ राइट विदाउट रेमेडी इज नो राइट सेमति भी हमें कहि परिबा सो लॉ प्रोवाइड्स अ रेमेडी फॉर एवरी रॉन्ग a person wrongfully dismissed for service can claim compensation for example देला ठीक अछि यूपी जस्ट इफ रेमेडी ओके और लास्ट है इन लिमाइन ओके at the threshold or beginning okay in limine means seda case was dismissed in limine माने from the beginning first रही okay ताको dismiss करा है गला reject करा है so meaning at the threshold or beginning refers to rejecting a case at the very start illustration a court may dismiss a writ petition in limine if it lacks merit ठीक अछि normally कोन आपण कोर्ट जनरली से जहाँ भी केस टा आपण करचंती रिट टा देइछन रिट पिटिशन टा सुनी त मेरिट्स को जिवे तापरे जांगी से डिसाइड करिवे ठीक अछि सो इन लिमाइन मींस एट द बिगिनिंग बुझि पाले तो एई गुडा हमरो टिके टिके जानिबा काई दरकार ना जत्ते बेले हमें पढिबा एई टर्म्स गुडा आसीबो आ जदी हमें आ मानेटा जान नथिबा देन इट विल बी प्रॉब्लमेटिक ओके जो 25 टर्म्स ही अछि एमिति आउरी केते गुडे टर्म्स अछि वी विल come across that okay so those who have written it is fine those who could not write after the class mo eta jette bele upload hobo apन video sette bele eta ta सहित upload hi jibo apन sette bele ताकू लिखि दे परिबे okay but it is always better कि apn mo सहित लिखि देबे ताले better आपनकर सेही घंटे जो आरो टाइम ता आंसर राइटिंग करिका कर परिबे right so we'll stop here then